Tiger bittern sighted at Jatinga. Doiheng records highest number of visiting birds. After a long 9 years, tiger bitterns were sighted here at Jatinga during the seasonal mysterious birds phenomenon at Jatinga, perhaps due to increasing awareness about the love for birds among the netizens of Jatinga. The mysterious bird phenomenon has made Jatinga, only 7 km from Haflong, the district headquarters of Dimahasao in Assam, world famous for the peculiar behavior of migratory birds that occurs from September to November. The arrival of the birds, mostly Indian pitas, kingfishers of two varieties, common moorhen, drango, green pigeon, started recent nights at around 7:40 p.m. and lasted several hours as the weather condition was quite favorable. The birds are juvenile, that is, they belong to the current year's brood. None of these birds are found to be resident birds of Jatinga. Birds come on foggy, moonless nights flying against the wind when it blows south to west to north to east. Significantly, absence of even one of these conditions results in non-appearance of the birds. The birds, mostly aquatic and coming from various places, thronged a few locations near Jatinga under some specific weather conditions like moonless night, heavy fog, drizzling and southwest wind direction. Though there has been a marked fall in the number of visiting birds due to environmental and climatic change, but the enthusiasm of the bird lovers is still there to witness this peculiar phenomenon. Same phenomenon is also observed at Doiheng village, located on old Haflong to Silchar road via Redzol, some 25 km from Haflong, where a record number of birds visited this year. Gaubura of Doiheng Rothalmar said they come to know about this peculiar bird phenomenon long before, but people were not aware of the preserving or protecting them. But now, as the forest department organized awareness campaign and pleaded not to harm these birds, no villagers are harming the birds at present. Though he is now capable of going outside, but still Mar appealed to the villagers not to cause any harm to this visiting winged guest of Doiheng. GB prayed to the concerned authority to establish a bird watch tower at Doiheng, where birds throng during the phenomenon, so that tourists can watch the mysterious bird phenomenon at Doiheng, thereby making this village a must-visit tourist spot in Dimahasao. मुर्गी का जैसा बोरो वाला भी आता, हांस भी आता, जंगल का हांस सब आता है। किंगफिशर रहता है, हाँ, और सफा वाला, हाँ हाँ, 89 में, वही टाइम से मालूम हो, वही जगह नाम गया ना, उसका आगे में भी है, आवाज़ हम लोग सुनता है, चिल्लाता है। आजकल तो गाँव मार के तो कहा कोई मार के खाया भी होगा ना क्या, आगे में तो हम लोग खाता है, ऐसे से भी पोस्टर उधर में लिख के रखा ना, आगे में 10 साल तक में रहा, हवा से सब तोड़ दिया ना। तो आप लोग ऐसा देखभाल करेगा बोलने से ना, एक तो टूरिस्ट बर्ड वॉचिंग सेंटर ना, तो मोटे होने से भी तो बनाई देने से तो सब आदमी आके देखने मिलेगा। Uhin Langthasa, DFO West Division, said the Forest Department is committed to protect and preserve this visiting winged guest and continuing the patrolling during the entire season so that none can cause any harm to them. Regarding the sighting of tiger bitter after 9 years, he said it is very encouraging that some rare and endangered birds, including tiger bitter, are being sighted at Jatinga after long 9 years, which proves that people are now very much aware of preserving and protecting birds of Jatinga and Doiheng. He also assured for safety and security of the birds of the Forest Department, always ready to cooperate with the villagers and others. जटिंगा में और दोहेंग एरिया में जो बर्ड फेनोमेनन जो होता था अभी हो रहा है अभी
और हम लोग ने अभी कुछ हम लोग ने साइटिंग भी किया है सारा चीज़, ये जो बर्ड फिनोमेना। और इन लोगों का सारा सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम लोग ने सारा स्टाफ एंगेज करके रखा है। और आज मैं खुद पेट्रोलिंग में आया हूँ, आज मैं दोयांग में हूँ और मेरा सारा स्टाफ लोग क्या ड्यूटी कर रहा नहीं कर रहा, सारा चीज़ देखने के लिए आया है। और हम लोग सारा मुस्तैदी के साथ मेरा सारा स्टाफ काम कर रहा है और प्लस ड्यूटी कर रहा है। और हम आशा करता है ये जैसे हम लोग अवेयरनेस करके और ये चीज़ हम लोग प्रोटेक्शन देके हम लोग का ये जो बर्ड्स का जो एरिया है, तो हम लोग बर्ड्स को और ज़्यादा अच्छी तरह प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। और आने वाला टाइम में जो पूरा दुनिया को अच्छी तरह शोकेस करके हम लोग का पॉजिटिव वाइब्स भेज सकेंगे कि एंटायर दिमाग असम में नेचर फ्रेंडली, वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली सारा एरिया हम लोग के यहाँ पे है। नहीं, आफ्टर 9 ईयर्स हम लोग का ये टाइगर बिट्टन जो इस बार साइटिंग हुआ है, ये हमको लग रहा है कि ये सारा चीज़ सारा गांव वाला का, सारा या लोकल विलेजर्स का और डिपार्टमेंट का और रिपोर्टर आप लोगों का वजह से जो अवेयरनेस करके और जो पूरा प्रोटेक्शन देने की वजह से टाइगर बिट्टन का फिर से इस बार साइटिंग हुआ है।